Hello, people. I am Jaby Koay, joined by Achara, the big goofy KIRK. Hello. And we're looking at BB VINES. Itni, Jhand. English, Jhand. There we go. I can tell that this is going to be a smooth sailing. I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. BB VINES, Itni, Jhand, English, Jhand. We have some subtitles, Yes. all thanks to Achara's best pal in the world. Tanmay Agrawal. There you go. Thank you, Tame Agarwal, for making the subtitles. Thank you, BB VINES, for allowing us to react to this. Very, very, very much appreciate it. Still waiting to hear back about that interview thing. I contacted BB VINES' best pal. We go back and forth on Yeah. it. We go back and forth. And I said, so how about that interview thing? He's like, I'll get back to you. Not. Usually I take silence as a no or they forgot. 90% of the time it's they forgot. Yeah. So anyway, here we go. हेलो हाँ भैया बबलू जी के घर से बात कर रहा हूँ नौकर नहीं हूँ उनका बेटा हूँ भुवन बेटा पानी की बोतलें भर के छत से कपड़े उतार के ले आ। हाँ नौकर ही हूँ उनका मैं एक तरह से अच्छा सुनो हमारे घर का हीटर खराब हो गया उसको रिप्लेस करवाना है आपका कौन सा एग्जीक्यूटिव है भाई आप तो गल्ले पे बैठते हो आपकी साइकिल वाले के बगल वाली दुकान है अच्छा बात कराओ एग्जीक्यूटिव हेलो भैया हाँ भैया नहीं सर। हेलो सर मेरे घर का हीटर खराब हो गया है उसको रिप्लेस करवाना है नहीं रिपेयर नहीं करवाना पिछले हफ्ते आपका बंदा आया था हीटर के ग्रिल पे पापड़ सेक के चला गया अरे 600 रुपए की चीज को क्या रिपेयर करोगे आप रिप्लेस करवा के तो वारंटी पीरियड में मेरी बात करा आप मेरे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए हेलो तुम्हें पता है कितनी दिक्कत हो रही है बेंचो तो पहले हीटर से हाथ गर्म करेंगे अब वो चल नहीं रहा तो सारे पैंट में हाथ डाल के बैठे अब क्यों वो कहावत नहीं सुनी झांटे से लगना अब उसी से हाथ गर्म कर रहे हैं डैडी को दे आप हमारे से एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए आपकी दुकान पे मेरे 2 बंदे आएंगे हाँ उनको यही बात बता देना उफ़े क्या होगा उफ़े तेरे होतर लाल हो जाएंगे मार मार के इतना लाल कर देंगे बंदर की गांड और तेरी गांड जुड़वा भाई लगेगी फिर बैठ नहीं पाएगा तो क्या करवाएगा रिप्लेस अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जा मैं कौन पीठ पे ना मुक्का मारूं ना नापू मैं गुद्दी बातों पे ही बुन फाड़ दूं नाम है मेरा हेलो 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 भैया एक तो ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत है बेंचो पीछे स्कूटी पे लड़की नहीं बिठा सकते क्यों पबजी के वेटिंग एरिया की तरह सारे डेटर साथ में रहते हैं लेट्स गो तो शैम्पू कर क्या करना यूज करके दोपहर की धूप में नीचे काला कपड़ा रख के ततर ततर करके मनाली की स्नोफॉल देखने का जो मजा है वो कहीं नहीं है तू पागल है तो फिर क्या करो पहले नहाने का मन बनाओ फिर गीजर ऑन करो फिर शैम्पू करो फिर कंडीशनर करो अब इतने सैक्रिफाइस के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता तो मैंने तो छोड़ दिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है तो बेटा एक काम कर अंडा लगा ले बालों में सी पिछला ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था वो वीगन थी और डेट पे मेरे बालों में से अंडे की स्मेल आ रही थी आई हेट एग्स लेकिन कुछ भी कहो वो इंस्टाग्राम पे अंडे ने कायली बहन जी को हरा दिया नहीं आप कैसे जानते हो कायली के बारे में लगता है मैं गैस पे अंडे रख के भूल गया और बर्थडे के क्या प्लान तुझे याद है मेरा बर्थडे और क्या मैच कब आता है इसी साल वाह कोई रेवोल्यूशन मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तूने अपने बर्थडे पे क्या रेजोल्यूशन लिया था खुदाई बहुत कम करनी है हाँ मेरी कसम मर जाएगा रे तू बताना क्या प्लान है घर पे रहूंगा फैमिली के साथ पार्टी क्या पार्टी करनी है यार बड़े हो गए सब दूसरों से बर्थडे ट्रीट लेके अपनी बारी में मैच्योरिटी की बातें चोदने वाला तुम्हें सलाम है मैंने कब पार्टी की पिछले हफ्ते शंकर की पार्टी में बियर पी के कौन झूम रहा था बेंच धीरे बोल ले पापा घर में है पार्टी घर में नहीं होगी बाहर होगी और बेटा ये ना नीचे वाली किराएदार लग रहा है थोड़ी टेंशन में है क्या हुआ कल रात को वो अपने बच्चे से कुछ मांग रही थी वो दे ही नहीं रहा था बच्चा उसका तो कोई बच्चा नहीं है फिर बार बार गिव इट टू मी बेबी क्यों चिल्ला रही थी Oh yeah. Uncle, who are these characters? लड़कियां रहती है साथ में That's the dad. No, I know that's the dad. जाने की जरूरत नहीं अंकल हम तो ऊटी जाने का सोच रहे थे The long hair, ऊटी पे नियर बाय That's the mirror, isn't it? बाबा जी की बूटी Okay. अंकल पार्टी में आसपास के लोग बुला लेते हैं जैसे नीचे वाले और नीचे वाले भूगोल खराब है इसका एक काम करते हैं ऊपर ही छत पे कर लेते हैं छोटी सी पार्टी और वो भी लगा लेंगे वो छोटा शमशान बॉनफायर हाँ तो सबसे पहले किसका इंतजाम करें लड़कियां लकड़ियां बॉनफायर के लिए ठंड बहुत हो गई है नहीं आजकल 2 रजाई चाहिए या फिर रजाई में 2 क्या पापा आप अपने टाइम में ठंड में क्या करते थे यार मैं तो पहाड़ चढ़ने जाता था इतने वेले थे ना एक दोस्त के साथ वहाँ हम जाके ये आग लगा के घंटों तक बातें करते थे और आसमान में देखते थे ऊपर से पूरा शहर दिखता था और कभी कभी तो हम बारबेक्यू भी करते थे बारबेक्यू तुम बच्चे को लगता है ठंड पसंद नहीं है बिल्कुल नहीं क्यों सुकड़ा नन्नू मतलब
ठंड में नहाते टाइम ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं टाइटैनिक में जैक का क्या हाल हुआ होगा। क्या बोल रहा है ये? अंकल एक तो पहले से अंगूर, ऊपर से ठंडे पानी में नहा के किशमिश। आप बताओ ना, आपको कुछ काम था? हाँ बस छोड़दास बेटा, वो वर्मा साहब का आज बर्थडे है तो उनको बर्थडे की बधाई के लिए कुछ मैसेज लिख दे। अच्छा सुन, तेरा बर्थडे आ रहा है, हर साल मम्मी और मैं तुझे अपनी पसंद का गिफ्ट देते हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि तू हमें हमारी पसंद का गिफ्ट दे। एक मिनट, मैं अपने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दूं? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तू हमारा नाम ऊंचा कर दे बस। यार नाम ऊंचा करने से क्या होगा? आपका नाम बबलू से बबलू हो जाएगा क्या? हाँ तू मजाक मत कर, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया सी नौकरी करो और फिर हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अच्छा, शादी भी आपकी पसंद से? और क्या, अरेंज मैरिज बेस्ट है। क्यों? सुहागरात में शर्माने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तू चुपचाप मैसेज लिख और तू बहस मत कर। अंकल ये लो, लिख दिया। वाह वाह, धोनी की स्टंपिंग से भी तेज है। Wow. इधर देख ले भूतनी के, डियर मिस्टर वर्मा। अच्छी इंग्लिश है। I am glad you were born today as I have found a good friend in you. Your presence is of a great significance. And everybody just clap your hands. Although I have rashes on my pubes, but they still look like jamun. Hindi. Apple was invented by Steve Jobs, but life is dull without blowjobs. Doggy style is now difficult. Why are they taking the phone from him? Telling you this because you love missionary. बाद में बताना करी कि नहीं करी. Happy birthday. हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अच्छा मिश्रण है शब्दों का, और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कभी सुने भी नहीं। ये ब्लो जॉब क्या होता है? पापा वो कल हम लोगों का पहली बार चालान हुआ था, तो वो पुलिस वालों ने हमसे वो फूंक मारने को कहा था, वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव होता है ना, तो वो ब्लो जॉब। अच्छा, पर इसका इससे क्या लेना देना? हाँ वही तो, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा इसने। यार आज के जमाने में वो क्या बोल रही कितना जरूरी है। वो क्या बोल रही? वोकैबुलरी। ओहो वर्मा साहब, जन्मदिन की पांड्या शुभकामनाएं। अरे मैं अभी को मैसेज कर रहा था अभी। हाँ वो बच्चे लिखने में मदद कर रहे थे। यार बच्चों को ही सब पता है, हमें क्या पता मोबाइल के बारे में। अरे बेचारे कल इनका चालान हो गया तो पुलिस को ब्लो जॉब दे के आए हैं। हाँ कितने थे बेटा? तीन को देके आए हैं। हाँ, अलग अलग मुंह दुख गया होगा बेचारों का। ऊपर से या हलक तक? अरे फूक तो ऊपर से मारेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब बच्चे स्ट्रेट है या नहीं? Oh dear. I got a little lost because I didn't know who the other characters were. I thought the dad was the guy with the glasses initially, but then is the dude with the thing over his head. Is Yeah, the dad, no, that's so. don't you remember him from the other one? He's like the guy who's like always obsessed with sex. I remember that, but like I didn't know if he was bringing that guy back or if he was playing a dad this time just with a similar look. I guess because he's wearing a hoodie, so I could see why maybe that would be a little confusing because it's winter time. Who's this then? With I guess he's like a cousin. He called his dad uncle. So he's probably like just his cousin or like relative or something like that. Yeah, he's so like dad. the relationship between the characters was confusing. I was like a little bit lost, and then I'm like, oh no, that's the dad, and then it started to make more sense to me. Yeah. I think it's because like it's one of those things where if you've been following BBQ Vines from the start, then you're gonna know all the characters and who they are just based off of how he characterizes them and the costumes and stuff like that. So like to me, having seen that guy with the teeps and he's always making like lewd jokes and comments and the glasses and the hair pulled back like that, I'm like, I know exactly who that guy is. And so it was just a matter of figuring out who the rest of these guys were. That was pretty funny, like trolling the dad, because clearly his English is not that strong and it's just really easy to play a prank on someone like that. How would you know? Even though this is all fictional, I just ended up feeling bad for the dad. So much empathy, Jaby Koay. No, because the same thing happened to me when I was a kid, where I was in one of those daycare programs because my parents were both working, and these two kids asked me if I was a lesbian, and I'm like,
what's a lesbian? They're like, well, a boy. I could tell something was suspect. Yeah. And I was like, well, if a lesbian's a boy, then I'm a lesbian, duh. And they just started giggling. I'm like, well, clearly I'm not a lesbian. Clearly, like, you're just making fun of the fact that I don't know something. Yeah, yeah. And so I can see this happening where people take shots at their parents for not knowing certain things and knowing certain phrases and whatnot. Yeah. But because it happened to me, I'm just like, you're laughing at someone's misunderstanding of something. Mm-hmm. Yeah, I know. But it was kind of funny. I did enjoy that a little bit with your mom, though. Oh, with the fish? You the trolled my mom. You're so She bad. was the one, though, because what happened was she said that there was a traffic jam, and I go, why was there a traffic jam? And she says, because a fish fell on the road. Yes. And I go, what? The story just didn't make any sense. And I was trying, because when you hear someone with broken English, you try to fill in the spaces. Her English is not that bad. She said a fish caused a traffic jam. Yeah. And I go, what do you mean a fish caused a traffic jam? Like a fish fell on like a little piece of salmon fell on the road and then suddenly it's backed up for miles. Like I didn't understand the story. It didn't make any sense. When you're speaking this with someone who has got pseudo-English going on, you're trying to fill in the stuff that's not making complete sense. Yeah, but And I think you knew exactly what I didn't. she meant. I was very confused. I'm like, I just pictured this fish falling on the floor. It was flopping. And then suddenly there was a traffic jam. I was very perplexed as to how this could have happened. In fact, it was a truck full of fish. The truck door opened or something, and then all the fish fell on the highway. Like right away, your mom took umbrage with me. She's Yeah. like, hey, no make fun of me. My mom's a sharp lady. She'll let you have it. She'll let you know that's not acceptable. Don't make fun of my mom. Jeez. No make fun of me. I don't think she actually said She that, didn't say that. but it sounds hilarious. Yeah. It sounds like something your mom might She didn't say that. I think she just gave you a look. I was like, I got your number. I know what you're trying to do. You're trying to troll me. दोपहर की धूप में नीचे काला कपड़ा रख के ततर ततर करके मनाली की स्नोफॉल देखने का जो मजा है वो कहीं नहीं है. But that was so gross what he was saying about, it's so cold, he doesn't want to wash his hair, and then he just kind of just takes a black cloth and shakes out his dandruff so it feels like it's snowing in Switzerland. I'm like, that's nasty. Super nasty. Yeah. Do you know what I always appreciate about these videos that BBK Vines does? Just the way he edits them. The camera isn't just on the character that's speaking, it's also the reactions, and it's the reactions that really make it. Like when he cuts back to them all pissing themselves laughing because dad is talking about blowjobs and stuff. Just The cutaways. The little reactions. cutaways, the reactions that happen. And like I really appreciate that he thinks about all of that. Right, it makes it feel more real. Yeah, exactly. And even though it's just him handheld, I imagine it's probably just like a little cell phone camera or something or whatever he's recording on, just to be able to get that handheld feeling so it feels just kind of rough and ready. I know that a lot of thought has gone into the sketch itself and just all of the different aspects of it, so I really appreciate that. I want to buy BBK Vines a tripod. No, because then it'll lose that kind of that charm. He can afford a tripod. He's got how many millions I of know. subscribers? I'm just saying. I'm just saying. Because then he can use both hands while he's talking. I think it's charming still. It's definitely a formula that works. Right. Or maybe it is just like a nicer, more compact little camera because the quality looks quite nice too. You guys, thanks so much for hanging out. Hopefully, I don't know if you enjoyed my reaction to that. I was lost. I was genuinely like lost watching. I'm just trying to keep up. I'm like, what the hell's going on? I'm getting glimpses of ha-has here and there, and I'm just like, what? It's so fast. It's so super fast. super fast. I mean, for the Indian audience, I'm imagining that they're able to keep up with it. But even in English, I would imagine you'd want to slow that down a little bit. Let there be room for the laugh track. If you watch Friends, for instance, anytime there's a joke, there's a gap between the joke to give you a chance to like react to it and laugh before introducing the next joke so that you can laugh at that. Right. So there's a bit of space between like the dialogue, which is unrealistic. It would be like this where it would be, bing, bang, bong. For comedy, I think it's sometimes good to allow a moment to breathe. To breathe, otherwise you'll fly past another joke. What'll happen is like if I'm laughing, I'll lose my spot. You guys, thanks so much for hanging out with us. Hopefully you enjoyed that. Check out Achara KIRK on the social media as well as the jabs if you feel like doing that. Social media, Instagram, Twitter, Snapchat's not one of those things, and neither is TikTok. Those of you using a VPN so you can stay on TikTok, TikTok? TikTok. Hey, get off that TikTok! Too hungry. Get off that TikTok. Give me a TikTok. Delete that TikTok from your phone. Yeah, all right, Dad. Modi said get rid of TikTok. All right, Dad. Get rid of TikTok.